कर रहे थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे हम पहुंच गए थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या हमने लिखा था जरा बताएंगे? परीक्षा लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? प्रोविंशियल हमने शुरू कर दिया था कि नहीं? कर दिया था ना? अच्छा कल, ओके, हाँ जी, ठीक है। नाउ इज कमिश्नरेट हो गए थे इसके, ओके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोविंसेस के बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वो दो जने कहाँ गए? अच्छा, फिर उनकी वेट कर ले 5 मिनट के। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, सो द फर्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड आहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड आहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज, the district administration was in the charge of rajukas, again very important term, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, राजुकास कौन थे? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। In the district administration was in the charge of, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज वाज राजुकास, हाँ, यस, ठीक है, राजुकास, IAS ऑफिसर इज राजुकास। नेक्स्ट पॉइंट, हिज पोजीशन एंड फंक्शन is similar to, his position and functions are similar to today's district collector, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? IAS ऑफिसर। नेक्स्ट, he was assisted by Yuktas, again important, he was assisted by Yuktas और subordinate officials। तो जो युक्तास थे उनके सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स थे। ऑफिशियल्स, next point, census in
towns, census, CENSUS. Census in towns was conducted by municipal officials. पंजाबी की कहते सेंसस नो हाँ जी पंजाबी की कहते हाँ जी है हिंदी में बता दो एक ही वर्ड यूज होता है दोनों के लिए सर्वे नहीं सेंसस सन नो हाँ जी मर्दमशुमारी 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 इज सेंसस सर्वे तो और भी बहुत टाइप के सर्वेज होते हैं हाँ जी मर्दमशुमारी सेंसस और ਜਿਹੜੇ हाँ 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 वो सेंसस है ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ठीक है हाँ ठीक है जी कल ਨੂੰ ਜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ठीक है स्टेट जे पंजाब पंजाबी च काम होता है ठीक है इसलिए आपको पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी हाँ जी सेंसस इन टाउन्स वाज कंडक्टेड बाय म्युनिसिपल ऑफिशियल्स कॉमा स्पेशली टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ स्पेशली टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ both foreign and indigenous people ठीक है जी तो माइग्रेशन कितनी हुई वो जानने के लिए when was first census was held in India first census कब हुआ था हाँ जी दसो डाउट है कोई है फ्रीज किया हुआ मतलब सबसे पहली बार सेंसस कब हुआ था इंडिया में मॉडर्न टाइम्स में मतलब ये तो हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं ना मॉडर्न टाइम में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था 89 1881 है 1891 हाँ जी लगाओ तो का कोई हाँ 18 में था 1872 ठीक है लिखो इसको साथ में एडिशनल में लिखो ठीक है फर्स्ट टाइम सेंसस was held in India in 1872 हाँ जी 1872 ठीक है जब मॉडर्न इंडिया करेंगे तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट में देखेंगे ठीक है बट ये पता होना चाहिए ठीक है ये आता है क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन का सेंसस इज ऑलवेज रिलेटेड विद पॉपुलेशन ठीक है हाँ जी जानवरों का भी होता है सेंसस ठीक है कि कितने पालतू जानवर हैं कितने क्या है कितनी गाय है कितनी भैंसें हैं ठीक है हर एक स्टेट का भी होता है अलग से और देश का भी होता है ठीक है इसको ज्योग्राफी में आप करोगे हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट द डेटा collected were cross-checked by the spies SPIES जो जासूस होते थे वो उस डेटा को ऑथेंटिकेट करते थे चेक करते थे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सेंसस appears to have
census appears to have become a permanent institution census appears to have become a permanent institution during the administration of the Mauryas. During the administration of the Mauryas. ठीक है. Now next heading बनाइए ड्यूटीज ऑफ द राजुकास. जो डिस्ट्रिक्ट के हेड थे उनकी क्या ड्यूटी थी. ड्यूटीज ऑफ द राजुकास. हेलो. हेलो. हाँ जी. अच्छा एक मिनट मैं देख के मैसेज डालता. ठीक है. हाँ जी. ड्यूटीज ऑफ द राजुकास. फर्स्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू. To collect revenue. Second, repairs of the roads and canals. Roads and canals. अरे तो कच्चे रोड टूटेंगे नहीं. बारिशें आ गई तो टूट गए. मेंटेन तो करने पड़ेंगे ना. हाँ जी. नेक्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. Next duty, irrigation projects. Next, to look after the visitors. Next, trade and commerce. Next, maintain the well-being of society. ठीक है. Last one, watch market and traders. Market and traders. ठीक है. Now next is city administration. City शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन. नो ये अलग रहेंगे. According to Greek historians, GREEK, according to Greek historians, there were number of cities in Punjab which were administered by chief executive officer. Which were administered by chief executive officer.
called Nagrik, NAGRIK, नागरिक। ठीक है, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, नागरिक। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ नागरिक व, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग बना लो या पॉइंट बना लो। ड्यूटीज ऑफ नागरिक व फर्स्ट रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ डिफरेंट लेवल पे, ठीक है ना, पहले डिस्ट्रिक्ट किया हमने, अब सिटी। रेवेन्यू कलेक्शन, सेकेंड लॉ एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड सिक्योरिटी, जुडिशियल डिपार्टमेंट, next to look after hotels and restaurants, and last one to look after the foreigners, जो घूमने आते थे, ट्रेड के लिए आते थे, ठीक है, फॉरेनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैड म्युनिसिपल बोर्ड, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैड म्युनिसिपल बोर्ड, जैसे अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, विद बोर्ड BOARD, म्युनिसिपल बोर्ड विद 30 members, 30 members, ठीक है। नाउ दिस म्युनिसिपल बोर्ड was divided into 6 committees, ठीक है, and each committee had 5 members, ठीक है, टोटल कितने हो गए 30, 6 into 5 is equal to 30। आगे बात समझ, ठीक है। सबसे ऊपर म्युनिसिपल बोर्ड है, इस म्युनिसिपल बोर्ड की 6 कमेटीज हैं और 6 कमेटीज में 30 मेंबर हैं, ठीक है, एक कमेटी में 5 मेंबर, ठीक है, लिखिए इसको जरा। नेक्स्ट पॉइंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैड म्युनिसिपल बोर्ड विथ 30 members। नेक्स्ट पॉइंट, म्युनिसिपल बोर्ड was constituted of 6 committees, Next point, 5 board members in each, 5 board members in each to manage the administration of cities, to manage the administration of cities। हाँ जी, कहाँ रह गया बताओ, बताओ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 6 कमेटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द 6 कमेटीज वर, अब ये 6 कमेटियां कौन सी थी जिनके 5-5 मेंबर थे। द 6 कमेटीज वर, फर्स्ट कमेटी ऑन
इंडस्ट्रियल आर्ट्स, आर्ट्स ARTS, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, जो आर्ट का सामान इंडस्ट्रीज में बनता था। हाँ, फर्स्ट कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल आर्ट्स, सेकंड कमेटी ऑन फॉरेनर्स, थर्ड कमेटी ऑन registration of births and deaths. Next, committee on trade and commerce. Next, committee on supervision of manufacturers. Supervision on manufacturers. क्या चीज? इंडस्ट्रियल आर्ट और मैन्युफैक्चर सेम ही होंगे? नहीं, मैन्युफैक्चर और भी चीजें होंगी। इंडस्ट्रियल आर्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन, कमेटी ऑन कलेक्शन ऑफ एक्साइज, EXICE, एक्साइज एंड क्या लिखा था हमने? कमेटी ऑन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। क्यों नहीं होता होगा? इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी? एवरीथिंग वॉज, एवरी प्रोफेशन वॉज टैक्स्ड एंड हाईएस्ट टैक्स वॉज ऑन प्रोस्टिट्यूशन. It means prostitution was legal. ठीक है, क्योंकि देखो ना, शहर है, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपकी इकोनॉमी है वहां पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी है. इट इज नॉट ओनली एग्रीरियन इकोनॉमी. अगर तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो देन यू पे द लैंड टैक्स, ठीक है, या आप जितनी फसल उगा रहे हो उसका शेयर आप दे रहे हो. ठीक है, जो बंदा एग्रीकल्चर में नहीं इन्वॉल्व है फिर वो भी तो टैक्स देगा ना. ठीक है, तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर तो टैक्स देना ही देना है. ठीक है, तो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स के बेसिस पे ही चले. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, एक चीज और इसमें हम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज आहार. ठीक है, हाँ, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक वॉज नोन एज, ठीक है, चाहे नीचे ब्रैकेट पे लिख लो या साइड पे लिख लो, ब्लॉक वॉज नोन एज स्थानीय. स्थानीय, ठीक है, स्थानीय के नीचे द्रोणामुख 400 विलेजेस. ठीक है, द्रोणामुख मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ 400 विलेजेस. देन खवार्तिक 200 villages. And last
संग्रहण, हंड्रेड विलेजेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, हाँ जी, ठीक है। और टर्म्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, कोई नहीं, आराम से लिखो। एक मिनट, इसको 10 करो, ठीक है। ये 10 कैसे डिवाइड होंगे, दैट आई टेल यू। 200 भी, 200 को 20 का, 20 में 10, KHAVARTIK, T, ठीक है, इट्स टी, खवार्तिक, इट इज खवार्तिक, Done? हाँ जी, now first point, block was a lower division of district, ठीक है। ब्लॉक के नीचे, ब्लॉक के साथ आप ब्रैकेट में लिख लो तहसील, लोअर डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे लोअर डिवीजन है दैट इज ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लॉक वाज नोन एज स्थानीय, ब्लॉक वाज नोन एज स्थानीय। नेक्स्ट पॉइंट, ईच स्थानीय कंटेन 800 villages, each स्थानीय contains 800 villages। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा ना इसको समझना, ठीक है। देयर वर 2 द्रोणामुख इन एवरी स्थानीय, देयर वर 2 द्रोणामुख इन एवरी स्थानीय। स्थानीय में कितने विलेजेस हैं, सॉरी द्रोणामुख में 400 ना, एक में 2 मिलके 800 हो गए। क्लियर पॉइंट, रक्षा क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी द्रोणामुख हैज 400 villages, next point, group of 200 villages, group of 200 villages was Khawartik, group of 200 villages is Khawartik, ठीक है। नेक्स्ट, Khawartik had 20 blocks, 20 blocks containing 10 villages each, containing 10 villages each,
ठीक है। एंड नेक्स्ट लिख लो संग्राम, जो हमने लास्ट किया था, संग्रहण कंटेन्ड 10 विलेजेस। ठीक है, इट मींस 20 संग्रहण को मिला के एक खवार्तिक बनेगा। हो गए दोस्तों? ठीक है, सबसे नीचे संग्रहण, खवार्तिक, द्रोणामुख, ठीक है, देन स्थानीय एंड देन आहार। हाँ 20 ब्लॉक्स हो गए, एक ब्लॉक में 10 विलेजेस, 200 हो गए। ठीक है, हाँ नहीं कोई नहीं, इसको जरा ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ठीक है। फर्स्ट हाँ जी, फर्स्ट इज सदोघाधीप। सदोगा SOUDHSOUDHGEHA सदोघा DHIP सदोघाधीप P हाँ चीफ ऑफिसर ऑफ पैलेस। ठीक है, पैलेस जो किला होता था, जो पैलेस जो महल है, उसका चीफ ऑफिसर। नेक्स्ट द्वारिक, द्वारिक द्वार से द्वारिक। ठीक है, ही वॉज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ पैलेस। दुर्गपाल, दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट। दुर्गपाल सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ फोर्ट्स, FORTS सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट्स FORTS। ठीक है, नेक्स्ट आय AAY धारा, एक मिनट में लिखता हूं फिर देना। आय धारा अध्यक्ष, आय धारा अध्यक्ष। चीफ ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स, हाँ अध्यक्ष। ठीक है, चीफ ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। नेक्स्ट कोष अध्यक्ष, कोष मीन्स रॉयल ट्रेजरी। कोष अध्यक्ष, ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर, खजाने का ऑफिसर। ट्रेजरी TREASURY ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजर खजाना।
संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट, MINT, मिंट क्या होता है? और क्या होता है? खाने वाला नहीं, पुदीने का सुपरिटेंडेंट थोड़ी होगा। मिंट जहां पे कॉइन्स बनते हैं, ठीक है, जहां पे कॉइन्स बनते हैं, दैट इज मिंट। नेक्स्ट, स्वास्थ्य अध्यक्ष, स्वास्थ्य अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, स्वास्थ्य अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट्स। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क, टोल टैक्स, SULK, शुल्क अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ टोल्स, TOLLS। सीता अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, टोल TOLL, टोल टैक्स देते ना। हाँ जी, लिखो, एग्रीकल्चर, सीता मीन्स हल। नेक्स्ट, नाव्य अध्यक्ष, नाव्य अध्यक्ष की स्पेलिंग सेम है, नाव्य मीन्स बोट, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स, नाव्य अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। देन लौह अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन, पौथ्यव अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स, नापतोल, वेट्स, WEIGHTS, वेट्स एंड मेजर्स, MEASURES, ठीक है, कि जो चीज आप तोल के दे रहे हो वो ठीक होनी चाहिए, जो चीज आप नाप रहे हो, ठीक है, लैंड की नपाई होती थी, ठीक है, तो वो चीज ठीक होनी चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, वेट एंड मेजर्स। नेक्स्ट, अकारा अध्यक्ष, अकारा, AKARA, अकारा अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस। नेक्स्ट, व्यवहारिका, महामात्य, व्यवहारिका।
महामात्य, जुडिशियरी ऑफिसर्स, व्यवहारिका महामात्य, जुडिशियरी ऑफिसर्स। ठीक है, नेक्स्ट पुलिसांज, PULISANJ, पुलिसांज। पुलिसांज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तहसील के नीचे आ गया विलेज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। Village administration was in the hands of village administration was in the hands of Gramini. Gramini, GRAMINI. Village administration was in the hands of Gramini. Next point. He was controlled by superior. उसके ऊपर कौन था? ग्रामीणी के ऊपर. He was controlled by superior called Gopa. 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 Next point. Gopa was in charge of 10 to 15 villages. Kashmir. ठीक है, गोपा वॉज इन चार्ज ऑफ 10 to 15 villages, क्योंकि अब तक मनी सीन में आ गया था ना। हाँ, जो संग्राम है दैट इज द यूनिट, दैट इज नॉट द हेड। ठीक है ना, ये हेड है, वो एक यूनिट है। ठीक है, सो क्या लिखा था हमने? गोपा वॉज इन चार्ज ऑफ 10 to 15 विलेजेस। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसस वॉज अ रेगुलर एक्टिविटी of Gopa. Census was a regular activity of Gopa. Next point. They were also to count the animals in each house. They were also to count animals in each house, comma, details of agricultural land, details of agricultural land and crop patrons and crop patron. Patron, PATTERN. क्या लिख लिया?
क्रॉप, फसल। थोड़ा सेंटेंस को भी देखो ना, क्या क्या सेंस बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विलेज हैड अ कमिटी ऑफ elder persons. Village had a committee of elder persons called Gram Vruddha. ग्राम वृद्धा। ठीक है, हर एक विलेज में एक कमेटी जिसका हेड था ग्राम वृद्धा। ही हैंडल्ड लोकल डिस्प्यूट्स, जैसे सरपंच होता है, ही हैंडल्ड लोकल डिस्प्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ कमेटी ऑफ 3 government officials and 3 locals, 3 government officials and 3 locals was established to deal bigger disputes and cases, to deal with bigger disputes and cases. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू वॉज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट। Revenue was an important source of state. Revenue was important source of state. Hence, the important department of the administration. Next point, the chief of revenue department was called, the chief of revenue department was called, हाँ जी कौन था, हमने किया है पहले, the chief of revenue department दो ऑफिसर्स किए थे हमने, नो रिवीजन, समहर्ता, SAM AHA RTA, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, SAM AHA RTA, समहर्ता। ठीक है, अंडरलाइन, मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। Another important official was Sanidhata, SANNI. Another important official was Sanidhata, SANNI,
DHATA, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ट्रेयरर, खजांची, TREASURER, ट्रेयरर। नेक्स्ट इज सीताध्यक्ष was head of क्राउन लैंड, CROWN, जो लैंड राजा के पास है उसका ऑफिसर जो है सीताध्यक्ष, ठीक है, इंपीरियल लैंड ऑफ क्राउन लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रेवेन्यू was 1/6 of the total produce. Land revenue was 1/6 of the total produce. Next point. लैंड रेवेन्यू टोटल प्रोड्यूस के हिसाब से क्यों लिखा? टोटल लैंड के हिसाब से नहीं लिखा? नहीं, लैंड के हिसाब से नहीं, प्रोड्यूस के हिसाब से कितना प्रोड्यूस हुआ। तो वो तो सर प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स होना चाहिए ना, लैंड को तो नहीं। तो प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा है? लैंड से आ रहा है ना, इंडस्ट्री से थोड़ी आ रहा है। फिर ये प्रोड्यूस पे अलग टैक्स देते हैं? नहीं, प्रोड्यूस के देखो, जो आपका लैंड टैक्स होगा या तो वो लैंड पे होगा, ठीक है, या तो वो होगा प्रोड्यूस पे। लैंड तो आपके पास अनकल्टिवेटेड लैंड भी पड़ी है, उस पर आप कुछ प्रोड्यूस तो नहीं ना कर रहे, तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करोगे टैक्स कहां से भरोगे, ठीक है ना। तो जो लैंड के ऊपर आप उगा रहे हो उसका 1/6, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने अभी? हाँ, लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो अब ये आपने ध्यान रखना है, मौर्यस में कितना लैंड रेवेन्यू है, हाँ, गुप्ताज में कितना होगा, ठीक है, और मुगल्स में कितना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्योंकि समय समय से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू लैंड रेवेन्यू there were excise duty, forest tax, जंगलों से भी तो आप रिसोर्सेज ले रहे हो, वाटर टैक्स, टैक्सेस ऑन माइंस, माइन MINAS, जो बंदा वहां से निकाल रहा है तो गवर्नमेंट भी तो किसी बंदे को अपॉइंट करेगी ना, किसी कंपनी को आपने अपॉइंट कर दिया, हाँ, नहीं, गवर्नमेंट खुद बरादा थोड़ी निकालने जाएगा, ठीक है ना, वो तो किसी को अपॉइंट करेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट देगा किसी को, ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, द किंग वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी, द किंग वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी, जैसे प्रेसिडेंट है, the king was the head of the judiciary and the highest court of appeal. The king was the head of judiciary and the highest court of appeal, but appeal, APPEAL,
ठीक है, जैसे अब प्रेसिडेंट है, बट सर जेल होती थी वो क्या बोलते हैं अलग बनती थी क्या चीज? जेल जो बनाते थे हाँ, अलग बनाते थे अलग मतलब तो जेल तो अलग ही होती है। मतलब कि अलग ही जगह पे तो जैसे कि आज पे बना हाँ, कोर्ट अलग होती है, जेल अलग होती है। जेल है वो जैसे कि नॉर्मल थोड़ा दूरी बनाते हैं दूर बनाते थे सिटी के अंदर ही बनाते नहीं, मोस्टली जो जेल होती थी वो किले के अंदर होती थी, जहाँ राजा है ना, जहाँ पे राजा रहता है, वो किले के अंदर ही जेल होती थी। हाँ, क्योंकि वहां से निकलना मुश्किल है ना, किले से कैसे निकलोगे आप? ठीक है। द किंग वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी एंड द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, बट ड्यू टू लार्ज एम्पायर judges were appointed to resolve disputes. Next point. The Supreme Court was located in the capital and the Chief Justice was called Dharma Thi Karan. Chief Justice was called Dharma Thi Karan. Next point. The nature of punishment depended on the nature of punishment depended on the nature, comma, gravity, nature, comma, gravity, हाँ, circumstances, and the varna of the offender and offender, OFFENDER, offender and the plaintiff. प्लेंटिफ होता है जिसने कंप्लेंट की, प्लेंटिफ, PLAINTIFF, ठीक है, और ऑफेंडर जिसने जुर्म किया हो। प्लेंटिफ से क्या लेकर कंप्लेन करने वाले क्या लेकर आते हैं कोई भी कर सकता है नहीं, ऐसा नहीं होता था। जो आपकी तभी तो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था ना, कि आप अगर न्याय भी कर रहे हो तो पहले आपकी जात देखी जा रही है, फिर आपको न्याय दिया जा रहा है। ठीक है। ग्रेविटी का मतलब है कि जो जुर्म है वो कितना संगीन जुर्म है, जो मर्डर की है कि चोरी की है। ठीक है, चोरी भी अगर की है तो किसी को मारा पीटा है या सिर्फ चोरी करके भाग गए, ठीक है ना, तो ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी मतलब कि जो यूजेज ऑफ वर्ड है वो देखो आप, देयर आर मल्टीपल यूजेज ऑफ वर्ड। ठीक है, ग्रेविटी डजंट ओनली मीन द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, तो उसको और कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी किसकी देखी जा रही है? क्राइम, किस टाइप का क्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, subordinate courts
are under amatyas. At district level, subordinate courts are under amatyas. AMATYAS. ठीक है. Next point. In towns, cases were settled by नगर व्यवहारिका महामात्यास. नगर व्यवहारिका महामात्यास. ठीक है. Now the last point. At the village level, cases were settled by ग्राम वर्धा. Cases were settled by ग्राम वर्धा. ठीक है. Now next is military administration. Last administration, military administration. The Maurya army was well organized. The Maurya army was well organized and was under well organized under the control of Senapati. सेनापति. हाँ, सेनापति देनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट. देयर वॉज अ बोर्ड ऑफ 30 members. बोर्ड. हाँ, देयर वॉज अ बोर्ड ऑफ 30 members to look into matters pertaining to war. ठीक है. वॉर मैटर्स को देखने के लिए 30 मेंबर. हाँ, मैटर्स pertaining, PERTAINING, pertaining to war. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. These members were placed in 6 committees. Placed in 6 committees, and these committees were responsible for मैनेजिंग. हर एक विंग है, इसके लिए एक अलग ऑफिसर होता था. ईच ऑफ द अबव विंग्स वॉज कंट्रोल्ड बाय अध्यक्ष. और सुपरिटेंडेंट्स. ठीक है. फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री, headed by पदाध्यक्ष. PADA, पदाध्यक्ष. पद जो पैदल चल रहे हैं,
PADA, पदाध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कैवेलरी हेडेड बाय अश्वाध्यक्ष, जो घोड़े पे हैं, हाँ जी, बोर्ड ऑफ कैवेलरी, अश्वाध्यक्ष, अश्व मीन्स हॉर्स, बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट्स, बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट्स, रथ अध्यक्ष, and last, board of war elephants, board of war elephants, हस्त्य अध्यक्ष, HASTHYA, हस्त्य अध्यक्ष, HASTHYA, हस्त्य अध्यक्ष। ठीक है जी। So this was about the administration of Mauryas. मौर्याज का एक टॉपिक रहता है दैट विल टेक अप इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, दैट इज मौर्य आर्ट। ठीक है, आप सिर्फ एक टेबल बना लो इसका ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए मौर्य आर्ट का। ठीक है, मौर्यन आर्ट, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोर्ट आर्ट, जो शाही आर्ट होती थी महलों में, दरबारों में, ठीक है, और दूसरी कॉमन आर्ट जो आम लोग करते थे। ठीक है, फर्स्ट वाज कोर्ट आर्ट, ठीक है, एंड सेकंड इज पॉपुलर आर्ट। ठीक है, कोर्ट आर्ट्स जो है दैट इज इन पैलेसेस, ठीक है, ऑन पिलर्स, ठीक है, एंड ऑन स्तूपास। जो पॉपुलर आर्ट है ये कहाँ मिलती है? केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स ठीक है। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है
करें कि इतना ही बहुत है? चलो ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, जो ग्रीक्स ने इन्वेड किया, अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। ठीक है, तो वो सारे इसको लर्न करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, काम बहुत इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा निकाल लो बस दिन का, रट्टे मारो। सौन तो पहले रट्टे मारे ये सवेरे सवेरे उठ के मारो रट्टे। ठीक है, जो भी उठ दे ਹੁਣ ਤਾਂ क्लास लेट ही होंगी है ਤੁਹਾਡੀ? 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ है? 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ क्लास नहीं? छुट्टी थी? पता नहीं, मुझे तो सर ने बोला कि क्लास रखो, मैंने रख ली। अच्छा। अच्छा ठीक है, जो लर्निंग पार्ट है ना उसको सुबह सुबह किया करो, फ्रेश माइंड। ठीक है, सवेरे उठो। सुबह कितने बजे उठते हो? 4-5 के बीच में उठ जाते हो? मतलब जब मुझे उठना होता है अपना सोना, फिर मैं 9 बजे तक उठता हूं। ठीक है, शेड्यूल बना लो और सुबह जल्दी उठ के 6 बजे उठ गए। 4-5 बजे तो औखा है। 6 बजे भी औखा है। कितने बजे उठते हो? 8:30 है। ऑब्वियसली जी, रात लेट सो गए तो फिर सवेरे पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, मतलब अपना कोई भी टाइम सेट कर लो। ठीक है, रात का टाइम सेट कर लो।